जो देश के परिस्थिति है उस पर जो कह रहे हैं कि गोपाल जी ने जो फंड्स सवाल उठाया ना, सवाल ये उठाया कि केंद्र से मद में जाता है पैसा अलग अलग विकास कार्यों के लिए, वो इस्तेमाल ही नहीं होता, वो वापस आ मैं जाता बता है। रही हूँ मैं ठीक है, रूपा जी माफ कीजिएगा, तस्वीरें थोड़ी सी हम बता दें। आप देख पा रहे हैं इस समय संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें, जो बजट की कॉपी हैं वो संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं, और ये जो तमाम बजट की कॉपी हैं वो तमाम सांसदों को दी जानी होती है, और बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये सारा काम होता है। जैसा आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, समय मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ठीक 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और ये सी तस्वीरें बजट की कॉपियों को लेकर आप संसद भवन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, तमाम प्रक्रिया पूरी होती हुई बजट पेश करने से पहले की राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनसे अनुमति प्राप्त की। वित्त मंत्री ने कैबिनेट की बैठक कर रही है, वहां से अनुमति मिलेगी और बजट की प्रतियां भी पहुंची हैं संसद भवन, और देर के पश्चात, जैसा कि मेरी सहयोगी प्रीति कह रही हैं, 11 बजे वित्त बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, और इसके बाद भी एक अहम पड़ाव होता है जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। जो तमाम घोषणाओं के मुख्य पॉइंट्स होते हैं बजट, उस पर प्रकारों के सवाल जवाब होंगे, एक जो बारीक विश्लेषण होगा वो कहीं ना कहीं अपनी बात साफ करेंगे वित्त मंत्री। उससे पहले 11 बजे का इंतजार है। तस्वीरें आप जो लगातार आ रही हैं वो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेश होने से और बजट पेश होने के पश्चात बाजार क्या कहता है, वो भी कहीं ना कहीं कहानी बयां करता है कि किस तरीके का बजट पेश किया गया और किस तरीके के बजट की अपेक्षा थी बाजार को। और बाजार आज 437 अंक ऊपर उठकर आज शुरू हुआ है। तो मैं ये कहूंगी, गोपाल जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसमें कोई हम लोग किंतु परंतु नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास एम्स नए बने हैं तो उसमें डॉक्टर्स की वैकेंसीज क्या फिलअप हुए हैं? अगर हमारे यूनिवर्सिटीज बने हैं तो क्या उसमें वैकेंसीज फिलअप की हैं? क्योंकि अगर टीचर्स नहीं, प्रोफेसर्स नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन स्टूडेंट्स को? और दूसरी बात है कि अगर दूसरे राज्य में पैसे जाते हैं तो वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे हम जब पॉलिटिक्स के शुरुआती दौर में हम नगर पालिका से उठ के आए हैं, मुझे मालूम है कि फंड फ्लो जो है गवर्नमेंट से ऐसे टाइम में वो पहुंचते हैं कि आपका टेंडर प्रोसेसिंग से लेके इसमें काफी कम से कम 1-1.5 महीना टाइम लगते हैं। लेकिन अगर टाइम पर, जिस हिसाब से गवर्नमेंट अगर टाइम पर पैसा राज्य को भेजते हैं तो जरूर इस पर जो है टाइम से कार्रवाई होती है, क्योंकि हम लोग सब कोई चाहते हैं कि चाहे मिड डे मील का पैसा हो, चाहे आपके और भी सर्व शिक्षा अभियान का पैसा हो, ये सब पैसा टाइम से मिले। आज बताइए, जो चाइल्ड लेबर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था पिछले गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, वो ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। वो क्या था कि रैक पिकर्स को 14 साल तक हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो है आपका जो लेबर के बच्चे लोगों को, जो रैक पिकर्स है, उनको जो ये पढ़ाए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट को पूरे बंद कर दिए गए। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिए जा रहे हैं। ये चीज होने नहीं चाहिए। ये हमारे और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के भीतर की बात हो या स्टूडियो के भीतर की बात हो, पक्ष और विपक्ष का जो विचार है ना, वो अलग अलग परिलक्षित होता रहा है और अभी भी परिलक्षित हो रहा है। खूबसूरती भी है, मैं और चूंकि आप तीनों माननीय सांसदों को जाना है, संसद भवन में बजट की कार्रवाई का हिस्सा भी बनना है, एक प्रश्न जो है सुशील जी से पूछ लिया जाए। सुशील जी, ये बड़ी बात है। एक जाहिर तौर पर एक स्मूथ सिस्टम की भी बात है। जब हम अच्छे इकोसिस्टम की बात करते हैं, स्टार्टअप को लेकर दुनिया में हमने बहुत मैं कहूं कि सबसे अच्छे इकोसिस्टम में से एक दिया हुआ है। भारत के अंदर हम देख रहे हैं तेजी से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर स्मूथ फ्लो है चीजों का तो चीजें अपने आप और बेहतर होती दिखाई देंगी। बजट को लेकर जब बात की जा रही है, तमाम जो विभाग हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, उन्हें जो बजट एलोकेशन होता है कई बार वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी, और इसके साथ ऐड ऑन करना चाहता हूं कि आपने समस्याओं की और तो इस बजट में क्या प्रावधान आप देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ शिक्षा का जो बजट है ना, वो कम से कम 6% होना चाहिए, जो 3.5% भारत सरकार का है। हेल्थ का बजट हमारा बढ़ना चाहिए। ये जो बेसिक प्राइमरी सेक्टर है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को
चाहिए। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लगाई, हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया, परंतु क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से हर 3 किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, आबादी के साथ होना चाहिए? क्या ये हम आज से क्रिएट कर पाए? ये तब क्रिएट होंगे जब बजट के अंदर प्रोविजन होगा। अगर भारत सरकार कमीशन जो तय किया था आज से 20 साल पहले, उसने 60% एजुकेशन पे लगाने की बात करी थी। आज तक भी हम 3.5% भारत सरकार एजुकेशन पे लगा रही है। राज्य सरकारें कहीं-कहीं, दिल्ली सरकार की मैं बात करूं, 26% एजुकेशन के ऊपर लगा रही है, हेल्थ के ऊपर 13% लगा रही है। हम 2% के करीब केंद्र सरकार है। लेकिन सुशील जी तो मैं आपको रोकना चाहता हूं। अगर भारत ये आप जिस प्रतिशत की बात कर रहे हैं शिक्षा पर खर्च करने की, वो सरकारी खर्च की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो भारत में शिक्षा पर खर्च होता है वो 26% से ज्यादा है। मैं तो केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार का भी तो दायित्व बनता है ना भारत सरकार का कि हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान विकसित हो, तभी तो हिंदुस्तान विकसित होगा। 75 साल देश की आजादी को हो गए, अभी हम विकासशील श्रेणी से निकल नहीं पाए हैं। विकसित देशों के ऊपर हमें सोचना पड़ता है कि वहां हम कैसे जाएं, तभी हिंदुस्तान जाएगा जब हिंदुस्तान शिक्षित होगा। और ये बजट के अंदर पैसा बढ़ाना चाहिए। मैं निर्मला सीतारमन जी से करबद्ध प्रार्थना भी करता हूँ कि इस ओर ध्यान दें। बिल्कुल, यानी अभी जो हालिया रिपोर्ट्स नहीं है शिक्षा को लेकर वो यही बताती रही हैं कि कोरोना महामारी का असर सबसे ज्यादा शिक्षा पर पड़ा, लेकिन उसके बाद खासकर जो गांव के स्कूल्स हैं वहां ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, लोग ज्यादा अब फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं। लेकिन जो टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो है, जो स्कूल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका सुझाव है सुशील जी कि लगातार उसे और अच्छा बनाया जाए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बजट का एलोकेशन और ज्यादा हो। उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी पॉइंट्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्री का गौर होगा और देखना होगा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। तो एक स्वास्थ्य पे तो हमने एक बड़ा बदलाव देखा है कोविड के बाद, एक बड़ा बदलाव रहा और एक बड़ा हिस्सा जो बजट का है वो स्वास्थ्य की तरफ मुड़ा है। तो ऐसे में और कितना दायरा इसका बड़ा होता देखेंगे बजट के अंदर, इस पर जरूर नजरें रहेंगी। 11 बजे 20 मिनट का करीब करीब का वक्त है प्रतिबिंब, जब बजट पेश होगा और देखना होगा कि जो तमाम लोगों के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन शिक्षा के अनुपात की यहाँ पर बात कही है आपने कि वो लगातार बढ़ा है। अनुपात की बात करें तो लड़कियों का स्कूल जाना भी, उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है। बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हालिया रिपोर्ट है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय की रही हो या अलग से जो एनजीओज अपने आप शिक्षा को लेकर रिपोर्ट्स तैयार कर रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है लगातार। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो टीचर और बच्चों का रेशियो है गांव में खास तौर पर, उस पर ध्यान देना होगा। जो डिजिटल डिस्पैरिटी की बात है गांव और शहरों में को लेकर, उस पर जाहिर तौर पर ध्यान देना होगा ताकि डिजिटली कनेक्ट हो गांव के लोग। इसके लिए एक बड़ा पुश क्या बजट के जरिए निकलता हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा जोर पिछले बजट में रहा, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्या और ऐसे आयाम रहेंगे जहां बजट का फोकस रहेगा ताकि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ सकें। भले ही जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर जो तमाम बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और उसमें बजट में जो भी छोटे और बड़े कदम हैं वो कहीं ना कहीं एक पुल साबित होंगे, एक ब्रिज साबित होंगे एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए। और सब बात जब अन्य देशों की जीडीपी हमसे बेहतर रहती है, आर्थिक विकास दर हमसे ज्यादा रहता है, तो तुलना की जाती है। जब हम और अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तब इस और कम लोगों का ध्यान जाता है। बिल्कुल। सुशील जी, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बातें कही हैं, बिल्कुल बुनियादी ये बातें भी हैं, कुछ सुझाव आपने दिए हैं। इसके अलावा आपने टैक्स को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। आप चाह रहे हैं कि रियायत टैक्स पर सीधे तौर पर भी दिखाई देनी चाहिए बजट में। अब 20 मिनट बाद, करीब 15-16 मिनट बाद बजट आने वाला है। बताइए और बड़े पॉइंट्स आप क्या चाहते हैं जो शामिल होने चाहिए? किसान की हालत सुधरे, महिलाओं को विशेष रियायत मिले, टैक्स की मैंने आपको बता दिया, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर सेक्टर में कुछ न कुछ बजट की परसेंटेज बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उद्योग विशेष तौर पे लगे ताकि हमारा जो देश मुख्य तौर पे कृषि पे आधारित देश है, उस देश की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है, जो कोरोना के अंदर भी जिस क्षेत्र में किसानों ने बचा के रखा है,
उनकी आय को बढ़ाना है तो उनकी फसल प्रोसेस होके दुनिया के हर हिस्से के अंदर जानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम निकाले, उन उद्योगों को प्रोत्साहित करे। वो जहाँ पे जिस किस्म की फसल होती है, मैं पिछले वर्ष लेह लद्दाख गया था। अगर मैं वहां की बात करूं तो आधी फसल नहर में बह जाती है, कीड़े लग जाते हैं, प्रोसेस नहीं हो पाती। मैं एप्रिकॉट की बात करता हूँ। एप्रिकॉट हमारे देश के अंदर लेकिन इतना बजट जो अच्छा होता है पैदा होता है कि सुशील जी सारी केवल परंतु खर्च का ब्यौरा नहीं होता बजट। खर्च कितना हुआ, कितना पैसा जो है सरकार के खाते में आया और कितनी बचत हुई, ये तीनों का लेखा जोखा होता है। आप जो बिंदु उठा बिल्कुल रहे हैं उसमें खर्च की बात तो की जा रही है, आय कैसे बढ़े सरकार की। जब आय सरकार की बढ़ेगी तभी अलग अलग क्षेत्रों पर खर्च हो पाएगा ना। आय तो जीएसटी हर चीज पे लगा दिया, आय तो बढ़े रही है। आपका जो नहीं, इनकम का जीएसटी स्लैब की, है आपने उसके अंदर जीएसटी की ज्यादा बात कही है, लोगों तो का कवर करना है। जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी संशय की स्थिति है। और संशय की स्थिति यह है कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उससे पूर्व आप ही के पार्टी के राजनेता इस बात को कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो कहीं ना कहीं जीएसटी के मद में आने चाहिए, उसके अंतर्गत आने चाहिए। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की वो बैठक होती है तो जीएसटी के अंतर्गत आने चाहिए, इस बात को बिसरा दिया जाता है। अब आपके पार्टी का, आपका अपना व्यक्तिगत मत क्या है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम हमारे जीएसटी के दायरे में लाए जाने हमारे चाहिए? पार्टी हमारे हम पार्टी एक हमेशा जानकारी मत दे दें, करिए कैबिनेट कि की जीएसटी बैठक आएगी हो तो चुकी करवा है। देंगे, कैबिनेट नहीं की आएगी हम बैठक के इसके बाद पश्चात अब वित्त मंत्री जाएंगी संसद भवन और 11 बजे के करीब आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बजट की कॉपियों की आप देख रहे हैं। बजट जो पेश किया जा रहा है वो पेपरलेस है। ये तमाम जो कॉपी है वो तमाम सांसदों को दी जानी है। बजट की कॉपीज आप देख रहे हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार, करीब 9 मिनट बाद संसद का सत्र शुरू होगा। दूसरा दिन है आज। बजट सत्र की शुरुआत कल हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। पहला दिन महिला राष्ट्रपति के नाम रहा, दूसरा दिन भी बजट का महिला वित्त मंत्री के नाम रहेगा। और आज हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को संसद में 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करते देखेंगे और इसके बाद राज्यसभा में भी बजट की कॉपी रखी जाएगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बजट की कॉपियों की हैं, जो हरे रंग के कपड़े से आप सील्ड देख रहे हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है इन कॉपियों को लेकर भी। किसी भी तरह कोई भी लाइन बजट पेश होने से पहले बाहर ना आए, इसे लेकर पूरा इंतजाम किया जाता है। और ये संसद भवन परिसर कॉपियां पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके बजट पर मंजूरी ले चुकी हैं और अब बस कुछ ही पलों बाद देश के सामने होगा वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट। जी हाँ, क्या ये बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट होगा? क्या 25 बरस के भीतर भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट होगा? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी। ये उस वक्त की तस्वीर जब राष्ट्रपति भवन से निकलकर वित्त मंत्री पहुंची थी संसद भवन परिसर में, और संसद भवन में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने वो अपना पैकेट दिखाया लाल कलर का, जो अभी तक रिवील नहीं हो पाया है कि इसमें गैजेट है या फिर क्या कुछ है, जिसके जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है। लेकिन उसके पश्चात कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पश्चात 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का वित्त बजट पेश करने वाली हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात 2017 से जो हमने देखी है, रेलवे बजट और आम बजट एक साथ मिला है। तो रेलवे को लेकर भी क्या बड़ी घोषणाएं होंगी, इस पर भी नजर होगी। और आपको बता दें कि 2017 से जो बजट पेश हो रहा है उसमें रेल बजट को आम बजट से जोड़ा गया और अब हर साल आम बजट ही पेश होता है। जी जी, और वृद्धों को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट से? क्या अलग अलग योजनाओं के जरिए उनको कुछ छूट, कुछ लाभ इस बजट में दिए जाने वाले हैं? उन लाभों और छूटों में से एक है रेल यात्रा के दौरान जो 50% की छूट वृद्धों को मिलती थी, वो कोरोना काल की वजह से रोक ली गई थी, स्थगित कर दी गई थी। क्या उसकी वापसी इस बजट में होने वाली है? इस पर भी सबकी निगाह टिकी रहेगी। बिल्कुल सुशील जी, बस कुछ ही पल और बचे हैं बजट को लेकर और जैसी बात भी हो रही है कि तमाम आप लोग के सुझाव
काफी अच्छे सुझाव होते हैं और सरकार ये चाहती भी है कि अलग अलग जो दल हैं वो अपने सुझाव दें, ताकि अगर सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो किया जा सके। लेकिन जाहिर तौर पर जैसा प्रतिबिंब ने भी कहा कि खर्च और आय में संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। उन सब के बीच सरकार के कदमों को कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि भारत का आम बजट दुनिया के लिए आशा की किरण बनेगा। न केवल भारतवासी इस बजट पर निगाहें टिकाए हैं, बल्कि पूरा विश्व देखना चाहता है कि विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का इस बार का वित्त बजट कैसा होता है। और प्रधानमंत्री बड़ी ने बात देखिए प्रतिबिंब, बजट संबंधी जो तमाम दस्तावेज हैं वो उपलब्ध हैं। जी हाँ, कुछ क्षण पश्चात इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, बजट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम बता रहे हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन पर संसद टेलीविज़न के माध्यम से तो बजट पेश करता हुआ आप देख सकते हैं वित्त मंत्री को। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी न केवल संसद की आज की गतिविधि संसद भवन परिसर में वित्त मंत्री के द्वारा वित्त बजट 2023-24 पेश करता हुआ आप देख पाएंगे संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी। ये वो तस्वीरें जब राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रही थी वित्त मंत्री, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और 2019 से पहले हमने देखा था कि वित्त मंत्री बही खाते के रूप में बजट को एक सूटकेस में रखकर लाया करते थे। लेकिन 2019 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो वित्त मंत्री हैं वो बजट फाइल को लाल कपड़े लपेट कर संसद पहुंचती हैं। और इस फाइल को जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में वित्त मंत्री के साथ वही एक लाल रंग का जो एक तरह से मैं कहूं कवर है, उसके अंदर क्या होगा अब कुछ ही पलों में देश के सामने होगा। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर केंद्र सरकार का विशेष जोर है। वित्त मंत्री इन अपेक्षाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगी। तो क्या एक संकेत माना जाए प्रधानमंत्री की इस बयान को, और माना यह जाए कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर इस बार के बजट का सारा ध्यान रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, दो बड़े आयोजन जो है इस देश में हो रहे हैं। G20 की अध्यक्षता मिली है। इस बार का सम्मेलन G20 का भारत में होने वाला है। इसके अलावा अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं और अमृत काल को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन जो समारोह की बात करें, उसका भी रिफ्लेक्शन क्या परिलक्षित होता है इस बार के आम बजट में, सबकी नजर इस बात पर भी टिकी रहेगी। सुशील जी, एक आखिरी रिएक्शन, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था दुनिया की जानी माने जो आवाजें हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई, वो देश के लिए सकारात्मक संदेश दे रही है कहीं ना कहीं। और बजट के ऊपर सिर्फ भारत की नजरें नहीं है बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं और ये आशा की किरण भी बनेगा। तो आप लोग का रोल किस तरह से रहेगा बजट भाषण में के बाद जो चर्चा होगी? डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान का व्यापार के ऊपर सारी दुनिया की नजर होती है कि किस तरीके से आजकल तो व्यापार का ग्लोबलाइजेशन सिस्टम हो गया है। हर देश के बजट के ऊपर हर देश के नागरिक की नजर रहती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एक बड़ा देश होने के नाते सारी दुनिया इस तरफ देखना चाहती है और हिंदुस्तान की जनता भी देखना चाहती है कि वित्त मंत्री कैसा बजट पेश करेंगी, क्या गृहिणी दे पाएंगी, क्या रसोई के बोझ को कुछ कम कर पाएंगी, क्या हिंदुस्तान के किसान की हालत को सुधार पाएंगी। हिंदुस्तान वासी भी देखते हैं और दुनिया के लोग भी देखते हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि निर्मला सीतारमन जी आज हिंदुस्तान के लोगों की आशाओं के अनुरूप बजट दे, ताकि कम से कम चुनावी वर्ष के अंदर तो लोगों की उम्मीद पूरी हो सके। पिछले कई वर्षों से लोग उम्मीद करते थे कि कुछ न कुछ राहत मिलेगी, इस वर्ष ये राहत की उम्मीद की जा रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें 6 से लेकर 6.8 जीडीपी रहने का अनुमान जताया गया है। ये अनुमान आपको लगता है कि सही है या फिर इससे और भी बेहतर होना चाहिए या हो सकता है? अगर हम आर्थिक जो अपराध होते हैं, आर्थिक घोटाले होते हैं, उनके ऊपर कड़ा लगाम रख के रखें और जैसे बहुत से लगातार कई सालों से देश में फ्रॉड हुए और अब पिछले हफ्ता में बड़ा भारी फ्रॉड हुआ, तो इन लगामों को कस के रखें। नियम कानून तो बने हुए बहुत हैं, परंतु नियम कानून का पालन सबके लिए एक जैसा हो, तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक विकास के अंदर मिलेगी। वैसे तो आर्थिक बिल्कुल। सर्वेक्षण में 1% विकास दर को घटता दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसको देखने से मुझे लगता है कि आर्थिक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो 5% के करीब होनी हाँ, चाहिए, जो बिल्कुल। पिछले मुख्य आर्थिक 7-8% सलाहकार कह रहे हैं कि जो 6.8 तक का टारगेट है, करीब 6% से लेकर हम अपर लिमिट में ही रहेंगे, यानी 6.5% के आसपास। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए सुशील जी। और सीधा एक बार हम चलते हैं, सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज, बताइए क्या अपडेट है? बस कुछ ही पलों का इंतजार, 5 मिनट का समय बचा है, मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर अब जो है हम देख रहे हैं सदन में काफी गहमागहमी है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले अभी कैबिनेट हुई है और उसने बजट को अप्रूव किया है, उसके बाद अब सांसद, तमाम दलों के सांसद जो हैं वो संसद भवन में आ रहे हैं और ये सुरक्षा कर्मी जो हैं अपनी जो है ड्यूटी को पूरा करते हुए उन सभी पैकेट्स को चेक किया जा रहा है, जिनमें वो प्रतियां हैं जिसमें बजट निहित है। और ये प्रतियां, जैसे कि हमारी सहयोगी प्रीति पहले बता चुकी हैं, ये सारी प्रतियां प्रतियां जो हैं बजट की, वो माननीय सांसदों को वितरित की जाएंगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी अपडेट कर रहे थे कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी माननीय सांसद संसद भवन परिसर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां वित्त बजट पेश करने वाली हैं। और बिल्कुल। और साथ ही जैसा साथ प्रतिबिंब आप बता रहे थे कि 17वीं लोकसभा का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा, और हमने देखा था इससे पहले जो सबसे बड़ा बजट भाषण रहा है वो भी वित्त मंत्री के नाम रहा है, 2 घंटा 41 मिनट। जी तो एक नजर कहीं ना कहीं इस पर भी रहेगी। पिछली बार करीब 1.5 घंटे का रहा था वित्त मंत्री का जो बजट भाषण था, 2020 में वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़। बना था। जी जी। तो ये भी देखना होगा कि आज जो बजट रहेगा वो कितना बड़ा रह सकता है, कितना विस्तृत रह सकता है। और विस्तार इसलिए भी संभावना उसकी नजर आ रही है क्योंकि जैसा कि $5 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बनाने का बजट हो सकता है। इसके साथ साथ ये अमृतकाल का बजट है, यानी कि देश को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने वाला बजट भी ये हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि आपने इस बात को दोहराया भी है कि मोदी सरकार 2.0 का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस और कहीं न कहीं इशारा करते हैं प्रीति कि ये बजट भी काफ़ी बड़ा हो सकता है और काफ़ी समय लेने वाली हैं वित्त मंत्री इस बार के बजट को पेश करें। बिल्कुल। तो बस कुछ ही देर में बजट होगा आपके सामने। 2023-2024 को लेकर जो बजट है, 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करने वाली हैं। लगातार संसद टीवी पर इसकी सीधा प्रसारण, संसद की जो सत्र है, उसकी कार्रवाई है, उसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। ठीक 11 बजे हमारे साथ बनिए। लगातार बजट के बाद भी जो हर बार विश्लेषण होगा वो भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण अब से कुछ
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN, and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens
a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several अनेक वैश्विक सूचकांकों में परिलंबित होता है। हमने कई साधारणीय विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, जैसा कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है। लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ कराने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण देना पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान किए जाने वाली इन क्षेत्रों के लिए हमने यह माना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने असाधारण कामयाबी हासिल की है। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़कर हम इन समूहों को अगले स्तर पर, जो कि आर्थिक सुशासन दिया जाएगा और बड़े स्तर पर हम उनको जोड़ेंगे और प्रत्येक के पास कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्हें कच्चा माल की आपूर्ति की जाएगी और उन्हें उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजार में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है।
उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की परिसंकल्पना की गई है। इस नई स्कीम के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत सहायता दी जाएगी। पर्यटन हमारे देश में घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियां एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। हरित विकास हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। इस बजट की प्राथमिकताएं इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब मैं प्राथमिकता नंबर 1 पर बात करूंगी, समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। सभी को हमने वरीयता दी है और हमने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया है। यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए जो युवा उद्यमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य होगा किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना। यह कृषि through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages.
We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest user and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location
in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti, and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion,
skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to. Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees
which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land, and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission, as well as existing schemes, to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration
which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states, and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced, and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia. A national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs.
Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, phase 3 of e-courts projects phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for
35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme, 500 new waste to wealth plants under Gobardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Gobardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts.
The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, I know, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers, including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism.
The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. So priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act
are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores.
The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to budget estimate. So budget estimate 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. Net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance